हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 12। तो लेट अस स्टार्ट। गिव द हेडिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी तो बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी की जब भी बात होती है, वी इमेजिन ए वायर। This is your wire. This is a wire. Conductor. It contains free electrons. इसके पास क्या है? Free electrons है. It contains free electrons. Clear? Free electrons. So when we apply a potential difference, V equals to E into D, suppose D length, potential difference, that is electric field. When we apply potential difference, that is we apply electric field across the wire, positive negative, positive negative. Electric field, that means it is a force by charge. You see, all are related. This is a wire. It contains free electrons. The electrons are moving randomly here and there. When we connect a battery of potential difference across the wire, the potential difference V means electric field into distance. Distance, it may be the length of wire. Electric field means force by charge. That means we are applying a potential difference, means we are applying a force. What force? Electric force. Then all the electrons will align in one direction, and due to the force, electric force, the electrons flow from one point to another point. So suppose this is the cross section area. This is the cross section area. The total charge flowing through this area in per unit time, that is the current. If we imagine another area, suppose this is cross section area, right? The total charge flowing through this area per unit time, that is called electric current. Clear? So you can give the heading electric current. Electric current. Electric current, that is the total charge flowing or passing through the area, flowing through a section of wire, इसको हम सेक्शन भी कहते हैं, through a section of wire per unit time is called electric current. Electric current. Symbol we write I. I means current. Q by T. Note it down. Okay, bachcho, I am going to rub it. Also we can write I, that is current, total charge flowing upon time taken. I means current. Electric current is also defined as total charge flowing through a cross section area of a wire upon time taken. If suppose dq charge is flowing through a section of wire,
in time dt, then we write I equals to dq by dt. That also we can write. If total charge dq is flowing through a section of wire in time dt, then I is given by dq by dt. Also we can write बच्चों, so we know that सपोज यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है, E. तो टोटल चार्ज थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इज n इंटू ई, n इंटू ई, इसी तरह से मान लो यहाँ से भी n इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, तो टोटल चार्ज n e. सो वी कैन राइट दैट इज Q is equals to n e. Therefore I is equals to n e by time t. This is also very important formula. That is number of electrons, E is the charge of electrons upon t, that is current. Now 1 by t आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी होता है, तो हम कभी कभी इसको ऐसा भी लिख देते हैं n e f frequency, NEF frequency. Frequency means 1 by t. Please note it down. The unit of current is ampere, that you know. The unit of current is ampere. एम्पियर फॉर्म ए से लिखते हैं. 1 एम्पियर का मतलब है 1 कूलम बाई 1 सेकेंड. 1 एम्पियर मीन्स 1 कूलम बाई 1 सेकेंड. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि 1 कूलम में कितना चार्ज है. हाउ मेनी चार्ज इज प्रेजेंट इन 1 कूलम, यानी कि 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन्स पास होगा. तो सो दैट करंट इज 1 एम्पियर. So that is, we know that Q equals to n e. Q means 1 coulomb, n निकालना है, e मतलब 1.6 into 10 to the power minus 19 value of e. So n equals to 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19. If you solve it, you will get 6.25 into 10 to the power 18 electrons. That means इतना इलेक्ट्रॉन्स 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 सेकेंड में इस सेक्शन से पास हो जाए, इस सेक्शन से पास हो जाए, इस सेक्शन से पास हो जाए, तो हम कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस द वायर. दैट मीन्स 1 एम्पियर इज वेरी बिग करंट. दिस मच इलेक्ट्रॉन्स इज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए वायर. ओके, इसको भी मिटा रहा हूँ बच्चों में. ओके, नाउ सपोज दिस इज ए कंडक्टर. ये एक कंडक्टर है, राइट. दिस इज ए कंडक्टर. नाउ इन दिस कंडक्टर देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स में दिखा रहा हूँ. जैसे कंडक्टर्स में क्या होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, और एटम्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वेरी लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के, तो बड़ी आसानी से निकल जाते हैं. तो वो निकल के रैंडम मोशन करते हैं. जैसे ये इट विल डू द रैंडम मोशन. रैंडम मोशन मीन्स नॉट एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, इट डू द रैंडम मोशन लाइक दैट. इस तरह से लोग मोशन करते हैं, तो लाइक दैट रैंडम मोशन. इसको हम इस रैंडम मोशन. क्लियर? There is no any particular direction. And ये जो रैंडम मोशन होता है, because there are so many atoms
इन द कंडक्टर. कंडक्टर में बहुत सारे एटम्स होते हैं एंड दे द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्ट रैंडम मोशन, और जिस वेलोसिटी से ये मोशन करते हैं उसको हम थर्मल वेलोसिटी भी कहते हैं. थर्मल वेलोसिटी, दैट इज यू कैन राइट, दैट इज इन ए कंडक्टर, in a conductor the free electrons valence electrons move randomly, okay. The velocity of electron is called thermal velocity, थर्मल मतलब हीट की वजह से वो मोशन करते हैं क्योंकि बहुत सारे एटम्स होते हैं. थर्मल वेलोसिटी एंड क्योंकि रैंडम मोशन करते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाते, तो इसलिए the average of random velocity, the average of random velocity is always zero, क्लियर. क्योंकि कभी ये एक डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, कभी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों का एवरेज जीरो हो जाएगा. कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी इज जीरो. मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैनी एटम्स. ओके, तो द एवरेज अगर हम इसका लें तो एवरेज ऑफ रैंडम वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो. क्लियर. तो इफ मान लेते हैं इफ u1 is the random velocity of first electron, u2 second electron, u3 third electron, dot un for n electron, then average velocity, then average random velocity, average random velocity that is equals to u1 plus u2 plus u3 plus dot un by n is equals to 0. Clear? Please note it down. Okay बच्चों, तो suppose this is a wire, ये एक वायर है. Now in this wire the free electrons are moving randomly and they suffers collision frequently with the positive ions, and the velocity acquired here is called thermal velocity and it is due to the thermal energy of the conductor. इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बार बार उससे कोलाइड करता है. कोलाइड करने के बाद में it moves randomly and that velocity is called thermal velocity and average is 0. Now if I apply a potential difference, suppose this is potential difference, V हमने अप्लाई कर दिया, लेंथ इसका L मान लेते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर, राइट. then it becomes positive, it becomes negative. So the electric field is set up. इस कंडक्टर में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. सो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स. इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू माइनस E into E. This is the force experienced by the electron. So when we apply potential difference that is battery across, when
When we apply a potential difference across the conductor, कंडक्टर के अक्रॉस जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड is set up, then electric field is set up across the wire, across the wire. So across the wire there is electric field, and due to this electric field the electrons will experience a force F equals to minus E into E in opposite direction of electric field, in opposite direction of electric field. क्लियर बच्चों? तो जैसे कोई कंडक्टर है, हमने उसके एक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो दैट इज दिस बिकम्स पॉजिटिव, दिस बिकम्स नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप अक्रॉस द वायर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. द इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर, it will experience a force because it is negative charge, so it will experience a force opposite to the direction of electric field, and that force is minus E into capital E, that is electric field. Now because of this force the electron will accelerate, hence the electron will accelerate, hence the electrons will accelerate, hence the electrons will accelerate in opposite direction of electric field and acquire a velocity, velocity v, final velocity v. Clear na? Because of this force the electron will accelerate opposite to the electric field and acquire final velocity v. पहले इसके पास थर्मल वेलोसिटी u था जो रैंडम था, राइट, और जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो बिकॉज ऑफ फोर्स इट विल एक्वायर सम वेलोसिटी v opposite to the E. Clear? And it will accelerate for very short time. कुछ समय के लिए ये एक्सेलरेट होगा बिकॉज it will again collide with the positive ions. It will again collide with the positive ions. So it will accelerate for short time. It will accelerate for very short time. Since it will collide, with positive ions, Note it down. Okay. तो दिस इज अ फिजिक्स यार बच्चों, ये कंसेप्चुअल चीज़ था कि कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो आई थिंक इट इज़ क्लियर. पहले इसके पास कौन सी वेलोसिटी थी? थर्मल वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल एनर्जी, रैंडमली मोशन कर रहा था एंड एवरेज इज 0. उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने लगा दिया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस ए फोर्स माइनस ई इंटू कैपिटल ई अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, and because of this force the electron will accelerate for very short time and again it will collide with the positive ions. Clear? And it will acquire final velocity v. तो अब इसमें दो चीज़ आ रही है, that is the short time for which electrons accelerate. इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम. मिटा रहा हूँ इसको मैं. The short time for which
the electrons accelerate. The electrons accelerate is called relaxation time. Relaxation time. इसको हम टाउ से लिखते हैं. टाउ मीन्स relaxation time. The short time for which electrons accelerate is called relaxation time, because after that again it will collide with positive ions and again it will accelerate. So if v1 is the velocity of first electron, final velocity, if v1 is velocity, acquired velocity, is the acquired velocity of first electron, then we can write, then you can v1 equals to u1 plus acceleration into tau 1. Similarly, for next electron we can write v2 equals to u2 plus a tau 2. For v3, third electron, we can write u3 plus a tau 3, and so on. Vn equals to un plus a tau n. Please note it down. ओके बच्चों, मिटा दो. नाउ एवरेज जब हम इसका निकालेंगे, द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज ऑफ एक्वायर्ड वेलोसिटी, द एवरेज ऑफ एक्वायर्ड वेलोसिटी, द एवरेज ऑफ एक्वायर्ड वेलोसिटी is given by the average acquired velocity, that is v1 plus v2 plus dot vn by n. We write this. Now v1 मतलब u1 plus a tau 1, v2 मतलब u2 plus a tau 2 plus dot by n. That we can write u1 plus u2 plus dot by n plus a we can take common, tau 1 plus tau 2 plus dot by n. Now this is thermal velocity, so it will be 0, and this is average relaxation time. Average relaxation time we write tau. Okay, average velocity, where tau is the tau 1 plus tau 2 plus dot by n. इसको क्या कहते हैं? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. क्लियर बच्चों? नाउ ए क्या है? ए इज द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक्सीलरेशन मीन्स फोर्स by mass, force by mass. So we can write average acquired velocity is equals to force on electron is E into EF force है, m is the mass of electron, and tau with minus. Tau is the average relaxation time. A is the force by mass. Force on electron is E into E by m. So ये जो average velocity है, this average velocity, this average acquired velocity is called drift velocity. इसको हम क्या कहते हैं? drift velocity. चलिए, we write Vd is equals to, मैग्नीट्यूड में हम ले लेंगे, तो इट इज E by m into tau. Very important formula. So what is drift velocity? Drift velocity is the average acquired velocity of electrons. That is equals to acceleration into time. Acceleration is minus E by m into time, tau, average relaxation time.
What is relaxation time? The short time for which the electrons accelerate, that is the relaxation time. And drift velocity is always opposite to the electric field in case of electrons. So note it down. Okay, so bachcho, that is the concept of drift velocity. Now what is the relationship between drift velocity and the current across the wire? So let us see that. Relationship between, give the heading, relationship between drift velocity and current relationship between drift velocity and current. So suppose this is a conductor, you imagine a conductor, the length of the conductor is L, suppose battery is applied here, V is the potential difference, okay, and then electron is there. This will provide the electric field and electron will experience a drift velocity Vd. It will experience a drift velocity Vd opposite to the electric field. This is electric field. ऐसा होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा. डायग्राम इज क्लियर. हाँ, तो that is, consider a conductor of length L, let electric field E, let electric field E is set up across it, let n is the number density, इसको number density कहते हैं. n is the number of electrons or number of charge per unit volume, number of charge per unit volume, that is, इसको कहते हैं number density. क्लियर. n को क्या कहते हैं? नंबर डेंसिटी कहते हैं. that is number of charge per unit volume. The volume of conductor, कंडक्टर की वॉल्यूम क्या होगी? तो बच्चों ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, सपोज A, और ये इसकी लंबाई ये L. तो तक वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज A इंटू L हो जाएगी. और ये क्या था? नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. तो टोटल चार्ज, सो टोटल कैरियर्स कहिए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू AL. ये हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और एक इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज E होता है, तो टोटल चार्ज हो जाएगी, टोटल चार्ज इज nqAl. This is the total charge. Note it down. n is the number of, okay, number of electrons कर लो, number of electrons. n is the number of electrons पर यूनिट वॉल्यूम. जैसे कि कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट. तो पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन्स है? दैट इज n. पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन्स है? n. इसी को हम क्या कहते हैं? नंबर डेंसिटी कहते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज AL. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज E है, तो टोटल चार्ज हो गई nqAl. क्लियर? nqAl. नाउ
Now because of electric field, the electrons will experience a velocity that is called drift velocity. So time taken by electrons to move from this to this, यहाँ से यहाँ जाने के लिए time taken by electrons to move opposite to electric field from one end to another end, time taken by electrons to move from, suppose आपका ये B था, तो from B to A is टाइम t इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. डिस्टेंस हमने L माना है और इलेक्ट्रॉन कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, Vd से कह रहा है. क्लियर? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव विथ वेलोसिटी Vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम B टू A, दैट इज लेंथ बाय वेलोसिटी. तो लेंथ बाय वेलोसिटी, ये टाइम टेकन. सो करंट क्या होता है, करंट इज Q बाई T, ये होता है करंट. नाउ Q मतलब अभी जो आपने निकाला था, टोटल चार्ज कितना है इसमें, NeAl, ये तो है वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई टोटल चार्ज बाई T. T इज योर L बाई Vd. तो बच्चों ये L कैंसिल हो गया, तो करंट इन द कंडक्टर I इक्वल्स टू nqAvd. Very important formula. Relationship between current and drift velocity. Current and drift velocity के बीच में क्या रिलेशन है, ओके, क्लियर. एंड इसी को हम करंट बाई एरिया, मैं यहाँ कर देता हूँ, करंट बाई एरिया इज इक्वल्स टू NeVd. करंट बाय एरिया को कहते हैं करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू NeVd. प्लीज नोट इट डाउन. J इज कॉल्ड करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज करंट डेंसिटी, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इसके पास डायरेक्शन भी है, बट फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर एडिशन. So this is very important formula, relationship between current and drift velocity. What is drift velocity, that we have discussed, and what is the relationship of current and drift velocity, and that we can write in terms of current density. Please note it down. Okay bachcho, let's see one numerical. A current of 10 ampere is maintained in a conductor of cross section 10 to the power minus 4 meter square. If the number density of free electron is 9 into 10 to the power 28 per meter cube, number density, number of electrons per unit volume, so 9 into 10 to the power 28 per meter cube, calculate drift velocity of free electrons. Do it? Yes, I think you have done it. So that we use this formula, I equals to nqAvd, and from here Vd equals to I by nqa. I कितना दिया है, 10 एम्पियर. नंबर डेंसिटी कितना दिया है, that is 9 into 10 to the power 28 per meter cube, and E of electronic charge that you know 1.6 into 10 minus 19. एरिया कितना दे रखा है, 10 to the power minus 4. तो if you solve it you will get this one, 6.94 into 10 to the power minus 6 मीटर पर सेकेंड. तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है बहुत कम होता है, राइट, दैट इज -3 से लेके -6 के रेंज में होता है. तो स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट, ये गलत है, बिकॉज इट इज़ एक्वायर्ड वेलोसिटी फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, एंड दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. ओके, तो होप यू हैव अंडरस्टूड माय वीडियो. पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक यू बच्चों.